Hi everyone, good evening. Welcome to Mrs. Eva. Welcome to the Facebook page of Mrs. Eva and YouTube channel of Mrs. Eva and of course Facebook group of Mrs. Eva. How are you all doing? Let me just quickly start this session on my other device also. I am really very sorry. I got a little bit late today. Please drop me a hi and a hello as soon as you join in so that I know that you guys are here. Okay, so let's see who all are here. Hi Akansha, how are you doing? Okay, hi Jumana, good evening, good evening. Hi Neha, how are you? So this is going to be a very, very important session, guys. Please just give me one moment. I want to share the link with all of you, and I really want to make sure that more and more people join in because this is a very, very important session. Please, can someone do me a favor and share the link in the Facebook group as well? Thank you, Jumana. Thank you so much. So I actually, okay, yes, I got the link. Hi, Ritaparna. Hi, guys. Hi, everybody. So I'm just trying to share the link in the group. Hi, Shiki. Hi, Raki. How are you? Hi, Shreya. Who else has joined in? I'm just trying to see your comments. Okay. So thank you. Hi, Pooja. How are you? Okay, so I'm going to give you guys a few moments before I start the session because this is going to be a very, very important session. Can someone please tag Mubina? Hi, Dinaji. Hi, Suguna. Thank you for joining in. So today we are going to cover a very, important topic, which is how to plan business expansion and growth for all small businesses. Hi Kiran, happy Makar Sankranti, Pooja. Thank you for reminding me. I keep on forgetting the wishing side of things. Hi Rita, hi Dr. Soumya, hi Mubina. So I was just saying that can someone please tag Mubina for me. So this is going to be actually a very, very important session for all of us. Yes, it is pretty cold, Shiki. So hi Sonia. So this is going to be a very, very important session because we are going to learn about how so at times what we are confused with is we start a business, we start generating some amount of revenue, we start generating some amount of profit, and then we feel confused ki acha ab kya karna hai, what do we do after this, where do we go from here, where do we move, इसके बाद क्या करें, what to do further. So that is what we are going to discuss now in this session today. Or you can also use this session as your guiding, uh, as a guiding thing for the year 2022. So a lot of people do not know what to do in the year 2022. They have no clue what to do what to do in the year 2022, how to move forward or how to move ahead in their business in the year 2022. So this is basically what we are going to discuss in this session today. So anybody who wants to know how to grow their business, anybody who wants to know how to expand their business, anybody who wants to understand what to do in 2022 with their business. So these are the things that these are the things that we are going to discuss today. That is why I kept on sending messages to a lot of you that this is going to be a very, very important session, and this is what we are going to discuss today. So before we move ahead, let me share that we'll have two max sharers and taggers today. So आप अगर शेयरिंग नहीं कर सकते हो तो टैगिंग कर दो, टैगिंग कर सकते हो, टैगिंग नहीं कर सकते तो शेयरिंग कर दो. वट एवर इज पॉसिबल फॉर यू, वी कंसिडर एवरीथिंग. हम टैगिंग शेयरिंग सब कुछ कंसिडर करते हैं. सो हाय समिता, yes, just in time. So we consider everything.
So two people are going to get one surprise from me. I'm coming up with a very special course on social media. तो मैं social media course मैंने इसलिए लिखा है because हम reveal probably in a day or two. We'll do the reveal in a day or two, and it is going to be something very, very awesome, and two people are going to get free entry in it. So do not forget about that. So you can do sharing and tagging. I'm trying to read your comments also. So sharing and tagging, tag and share wherever it is possible for you. So just do that. And in the meantime, do we have people? Should we give me a thumbs up if you guys are with me? Give me a thumbs up if you think we can start off the session now, because this is going to be a bit of a थोड़ा सा लेंदी सेशन होने वाला है. हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं. And let me know if you guys are ready with your pen and paper today, because बहुत टेक्निकल चीजें हम लोग नहीं कवर अप करेंगे आज. बहुत टेक्निकल बातें नहीं है हमारे पास आज जो सिंपल प्रोसेसेस हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स हम आज कवर करेंगे. ग्रोथ साइड, कैसे ग्रोथ पे कैसे ध्यान देना है और एक्सपेंशन क्या होता है, ये सारी चीजों पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं. तो so let me know guys, should we start off with the session? I'm just trying to read your comments. Okay, hi Sanjoli Bhabhi, how are you doing? Good evening. Okay, all right. Yes, Rakhi ji, I can understand that a lot of us are confused with the direction. So हम लोग को ना direction जो होती है वो कंफ्यूज कर देती है कि कहाँ पे आगे बढ़ना है, क्या डायरेक्शन आगे लेनी है. ओके, सो किरण इज सेइंग प्लीज गो अहेड. ऑलराइट, सो thank you Samita, thank you so much. All right, so guys, let's begin, and in the meantime you guys can keep on tagging, sharing, whatever is comfortable for you. All right, so I'm starting with a very basic, because a lot of us are हम लोग बहुत ही. हाय अंकिता, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. हाय गुरजीत. हम लोग मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगी, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ अस हम लोग बहुत एडवांस्ड स्टेज में नहीं है अपने बिजनेसेस के. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. So guys, business growth and expansion, these are very relative terms for everybody. So relative का मतलब होता है कि मेरे लिए business growth का मतलब कुछ और हो सकता है और आपके लिए business growth का मतलब कुछ और हो सकता है. Hi Megha, thank you for joining in. So business growth and expansion, these terms are very relative. आपके लिए और मेरे लिए मीनिंग जो है वो अलग अलग होगा. हर किसी के लिए मीनिंग अलग अलग होगा. It is different for different people. Okay, so find out what do you want for yourself. First of all, do not compare it with someone else. तो ये मत compare करना कि मेरे लिए मैं अपनी फ्रेंड से मैं कंपेयर करना स्टार्ट कर दूं कि उसका बिजनेस यहाँ से वहां पहुंच गया है, मेरा बिजनेस यहाँ से अभी यहीं पे ही है. बिकॉज यू माइट बी इन योर ओन प्रोसेस, इन योर ओन जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आप अपने बिजनेस के किसी एक पड़ाव पे हो सकते हो, आपकी फ्रेंड किसी और पड़ाव पे हो सकती है. सो प्लीज डू नॉट कंपेयर. एक तो ग्रोथ और एक्सपेंशन कभी कंपेयर करके, या गोल्स जो होते हैं ना, इनको हम गोल्स कहते हैं, बिजनेस गोल्स आप कह लो, कुछ भी कह लो, अपने इंडिविजुअल बनाने चाहिए हमेशा. दिस इज वन ऑफ द लेसन्स दैट आई टीच एवरीबडी. मेरे जितने भी मेंटीज हैं, जितने भी मेरे कोचेज हैं, मैं सबको यही बात समझाती हूँ दैट कम अप विद योर ओन गोल्स. अपने गोल्स खुद बनाना सीखो. किसी और के गोल्स देख के, वी कैन नॉट कॉपी समवन एल्सेस गोल्स. सो हम किसी और के गोल्स को देख के अपने गोल्स कभी नहीं बनाते हैं. ये बनाना भी नहीं चाहिए. हाय डॉक्टर रश्मि, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. सो ये सबसे पहला पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग कि मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक साथ स्टार्ट किया था. ईयर 2019 में हमने स्टार्ट किया, या 2020 में हमने स्टार्ट किया, या 2015 में हमने स्टार्ट किया, बट आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई और मैं अभी यहीं की यहीं हूँ. तो ये बिल्कुल मत करना. नेवर कंपेयर, राइट? हाय मॉम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. हाय मालती जी, हाउ आर यू? Okay, so this was the first point, that you decide your own goals, you make your own goals. Now, however, when you plan for your growth and expansion in 2022, you can keep these following points that I'm going to discuss below. You can keep these points in your market
in your mind. These points are standard for various markets and various niches, and you can commonly apply to all the businesses. तो अभी क्या है जो ये मैं points आपसे discuss करने जा रही हूँ. Okay सोनिया, hi. So अब जो ये points मैं आपसे discuss करने जा रही हूँ, ये मोस्टली सभी बिजनेसेस अप्लाई कर सकते हैं, सभी बिजनेसेस, सभी niches, सभी मार्केट्स अप्लाई कर सकते हैं. बट ऑल ऑफ यू मस्ट सिट एंड मेक अ प्रॉपर प्लान. सो अपना एक प्रॉपर प्लान बनाओ. व्हाट वुड यू लाइक टू फोकस ऑन इन दिस ईयर? सो when 2022 was approaching, I sat down and I thought कि मुझे इस साल exactly banani, you are absolutely right that comparing is not at all good, and it is not, you shouldn't do it, that's it. Good or bad तो दूर दूर ही नहीं आता है, करना ही नहीं है हमें. Okay, so when 2022 was approaching, I sat down and I thought कि मैं इस साल में ये 3-4 चीजें हैं जिन पे मैं फोकस करने जा रही हूँ या करने वाली हूँ. So this is what I want all of you to do, that फोकस सोचो बैठ के कि ये 3-4 चीजें हैं जिन पे मैं फोकस करूंगी इस साल में. नाउ अब इफ आई टॉक अबाउट इन बिजनेस टर्म्स, अब मैं बिजनेस टर्म्स पे आ रही हूँ. इफ आई टॉक इन एक्चुअली बिजनेस टर्म्स, तो ग्रोथ कुड बी लैटरल एंड वर्टिकल. सो 2 टाइप्स की ग्रोथ की हम बात करते हैं. ग्रोथ 2 तरीके की होती है, मोटा मोटा आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. बहुत ही आई विल ट्राई टू मेलो इट, थोड़ा सा उसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. 2 टर्म्स में हम ग्रोथ लेते हैं, लैटरल या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ग्रोथ. सो लैटरल ग्रोथ या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब होता है एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट्स. सो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम नई मार्केट्स ढूंढते हैं. नई मार्केट्स से मतलब है मेरा एज ऑफ नाउ आई एम डीलिंग इन सर्टेन मार्केट्स. सो अभी मैं मेट्रोपॉलिटन्स में डील कर रही थी, मेरे प्रोडक्ट्स जो है मेट्रोपॉलिटन मार्केट्स में जा रहे थे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जा रहे थे. बट नाउ आई स्टार्ट डीलिंग इन टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज, ऐसे सिटीज में भी मैं जा रही हूँ. सो दिस बिकम्स न्यू मार्केट्स फॉर मी. ओके, सो एज अ बिजनेस मैं अपनी मार्केट्स एक्सपैंड कर रही हूँ. इसको कहते हैं लैटरल ग्रोथ करना या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना. सो जस्ट टेल मी, इज दिस, ये आप लोगों को समझ में आया? दिस इज लाइक वेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन, बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने समझाने की कोशिश की है. काफी अगर हम लैटरल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की बात करें तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन होता है, पर छोटे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लैटरल या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब है कि एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट्स. मैं अगर अभी तक मेट्रोपॉलिटन में काम कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी कि मैं जाऊंगी और मैं कहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल टियर 2 में भी अब मैंने एक्सपैंड कर लिया, टियर 3 में भी मैं चली गई, मेरे लिए न्यू मार्केट्स आ गई हैं. सो दिस इज अ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन. ओके, लेट मी नो, क्लियर है? Okay, yes Mubina, I can read your comments. Yes, okay, simple. Okay, सबको समझ में आ गया? So this is lateral growth. इसको हम कहते हैं lateral growth या horizontal. Horizontal line, lateral line, ये होती है lateral growth. अब vertical का क्या मतलब होता है? Vertical growth मतलब कि that I am coming up with new products and services. सो फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस कोचिंग में हूँ. अब मैं क्या करती हूँ कि मैं नए नए प्रोडक्ट्स लाना स्टार्ट कर देती हूँ, नए नए सर्विसेज लाना स्टार्ट कर देती हूँ. कि बिजनेस कोचिंग के साथ मैंने लाइफ कोचिंग भी ऐड कर दी, या लाइफ कोचिंग अगर बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया तो मैंने क्या करा कि मैं सोशल मीडिया के और सर्विसेज ऐड करती जाऊं और मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड करती जाऊं. सो मार्केट मेरा सेम ही है कि मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज ही टारगेट कर रही हूँ, बट मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज करे जा रही हूँ. राइट, सो इसको कहते हैं हम वर्टिकल ग्रोथ. सेम मार्केट, वही मार्केट है मेरा जाना पहचाना कि मेट्रोपॉलिटन ही है मेरा मार्केट, बट मैं अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो ग्रो करे जा रही हूँ. कि मैं अभी तक तो मेरे पास 2 ही प्रोडक्ट्स थे, बट अब मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्रेजुअली मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बढ़ाई जा रही हूँ. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज वर्टिकल ग्रोथ. डू यू गाइस अंडरस्टैंड? डिफरेंस समझ में आ गया कि लैटरल ग्रोथ माने कि हम मार्केट चेंज कर रहे हैं,
अलग अलग मार्केट्स को हम केटर करे जा रहे हैं, बट हम अपने प्रोडक्ट्स इंक्रीज नहीं कर रहे, प्रोडक्ट्स हमारे वही रह रहे हैं. वर्टिकल ग्रोथ का मतलब है कि मार्केट सेम रख रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम इंक्रीज करे जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूजा की बात करूं, सपोज वॉलबीज केक्स की हम बात करके लेके चलते हैं कि वॉलबी केक क्या कर रहा है. लैटरल ग्रोथ में वॉलबीज केक्स ने क्या किया कि दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली तो ऑलरेडी मार्केट है, बट पूजा ने कहा कि मुझको लैटरल ग्रोथ करना है, तो पूजा ने कहा कि मैं अब बॉम्बे भी स्टार्ट करूंगी डिलीवरी, मैं आसाम भी डिलीवरी स्टार्ट करूंगी, मैं जम्मू कश्मीर भी डिलीवरी स्टार्ट करूंगी. ये हो गई पूजा की लैटरल ग्रोथ. अब पूजा ने सोचा कि मुझे वर्टिकल ग्रोथ भी स्टार्ट करनी है, तो पूजा ने क्या कहा, रहेंगे तो मेरे पास दिल्ली ही, सिर्फ दिल्ली में ही मैं डिलीवरी करूंगी, लेकिन मैं केक्स के साथ मफिन्स भी ऐड कर दूंगी, मैं केक्स के साथ लड्डू भी ऐड कर दूंगी, मैं उसके साथ लड्डू के बाद मैं ड्राई स्नैक्स भी ऐड कर दूंगी, मैं क्या कहते हैं पंजीरी भी ऐड कर दूंगी. सो इसको हम कहते हैं वर्टिकल ग्रोथ. ये हो गई वर्टिकल ग्रोथ. सो इस एग्जांपल से आई होप सबको क्लियर हो गया है कि वर्टिकल ग्रोथ और लैटरल ग्रोथ क्या होते हैं. दीज आर द टू मेजर एग्जांपल्स. बिजनेस में हम मेजरली यही लेके चलते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए, राइट? ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू वेट फॉर 1 सेकेंड एंड सी कि सबको समझ में आ गया है एग्जाम्पल से या नहीं आया है. ओके ओके, okay, so it seems to me that most of you have understood. So these are the two major types of growth. Now as a business you must decide. So ये हम सबका like हमारा अपना decision होता है, what do I want to do. Like for example, I probably as a business coach, I do not want to add a lot of products in my services, but I want to expand in new markets. So as a business I want to decide on myself. So this is a decision that I want to keep in my hand. मैं अपने हाथ में ये डिसीजन रखना चाहती हूँ. मैं अपने हाथ में ये डिसीजन रखना चाहती हूँ that and I should decide it myself, because you should put in a lot of thought and consider pros and cons, because अगर आप मार्केट एक्सपैंड करते हो तो उसके अपने बेनिफिट्स भी होंगे और अपने प्रोज होंगे और कॉन्स भी होंगे. बट आप प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड करते हो तो उसके भी अपने प्रोज होंगे और उसके भी अपने कॉन्स होंगे. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू actually decide that which growth do you want. So ये हमको बहुत सोच समझ के हमको ये decision लेना चाहिए. Okay, then this is a very important point guys, and I really want you all to understand that any expansion, कोई भी expansion या कोई भी growth, if you're looking forward to, it would mean that it involves your more it would mean that you'll be involved more in your business, and it would mean more time from your side. So be very sure that you're 100% ready for it. So a lot of times people they would think that they are ready for expansion, they're ready for growth, but they are not ready to put in that extra time. So be very sure that you are ready to put in that much time and effort. So आपका time भी चाहिएगा, आपका effort भी चाहिएगा, आपका involvement भी बढ़ेगा. So you have to understand that I am reading a few questions, मैं अभी reply करती हूँ. You have to understand that it will require a lot of time and effort, and you should be 100% ready for it. So let me see. I think I missed मुबीना का भी कुछ क्वेश्चन था. Most welcome, Mubina. So global shipping with varied range of products is called what, मैम? सो देखो मुबीना, ग्लोबल शिपिंग मतलब आप मार्केट्स एक्सपैंड कर रहे हो. सो मार्केट एक्सपैंड करने का मतलब लैटरल ग्रोथ हो गया. यस जुमाना, डेफिनेटली. Thank you, Kavita ji, for reminding. Guys, please keep tagging your friends or keep sharing this session wherever possible for you. Is it a good idea to do both at the same time? So, Amita, definitely
आप जो मर्जी चाहे वो टारगेट कर सकते हो. अगेन आई एम सेइंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनीथिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. सो वो इन्वॉल्वमेंट जब बढ़ती है हमारी, तो हमको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी होना पड़ता है. So just make sure that you are available and you are ready to pick on that responsibility. If you are ready for that, 100% go for it. मैं अभी आगे शेयर करूंगी कि what points do we have to keep in mind. क्या हमको पहले देख लेना चाहिए whether we are ready for that expansion or not. Should we plan to expand both ways at the same time or not? Or is it not advisable? Same question Neha has also asked. Neha Sarova. So you're just thinking like Soumita. You guys are vibing. Okay. So I'm just no worries, Kavita ji. Drive safe. Okay. Yes. All right. So yeah. So because another important point that you all should keep in mind is that when we look for growth and expansion, this also means that your marketing activity will increase, your marketing effort will increase, and that means that कहीं ना कहीं आपका expense भी थोड़ा सा बढ़ेगा, and you have to be ready for it. So वो एक ना a lot of people think कि I want to grow, हमें grow करना है, हमें expand करना है, but we don't want to invest in our business. Everybody, please understand, everybody needs to invest a little bit in their marketing and advertising या upskilling, आप कुछ भी कह लो. You can do it smartly. आप उसको smartly करो. You do not overindulge. आप कहीं मत करो. But hi Surbir, no worries at all. Do not indulge, overindulge कहीं मत करो. But please understand that हम startup में ना bootstrapping की बात करते हैं, हम startups में budgeting की बात करते हैं, but zero कहीं नहीं हो सकता. A lot of people I see that they just want freebies. They never want to invest in their business. This does not help. What they think is मैंने अपने raw material में invest कर दिया. Guys, raw material में आप लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख invest कर दो, आप उसके products बना के बैठ जाओ, but if you're not able to sell it, वो आपके किसी काम के नहीं होंगे. So please invest your money very wisely, be very smart, learn to market. I'm not saying that hire expensive agencies and hire expensive marketing officers या third parties hire करना start कर दो. Do not do that. But what you can do is learn to do these things yourself. It is perfectly possible. You can do it yourself. We also run so many short term courses. इतने courses हम run करते हैं. We do so many live sessions. Start learning it yourself. You can do it yourself. हम अपने startups जो अपने इस stage पे होते हैं, it is perfectly fine to take care of the marketing and advertising ourselves. You do not need to hire any third parties at all. And set a few targets for yourself, and then you can achieve those targets gradually. So my only point is, do not invest all your money in your raw materials and then think that I have invested so much money in my business, because that is not going to do any good at all if you're not able to sell your stuff, right? All right, great. Chalo, now let's move ahead. Okay, so my next point is set a few targets, and then based on those results you project expansion figures. तो अब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि हम एक्सपैंड कैसे करें, या हम ग्रोथ कैसे प्लान करें, ग्रोथ को प्लान कैसे किया जाता है, या एक्सपेंशन को प्लान कैसे किया जाता है. Okay, so I have a question from Rituparna. Let me read it. As in handmade stuff, so many people do live sessions. So is it mandatory to do every day for effective live selling? For effective selling? No, Rituparna. रोज तो live किसी के लिए possible नहीं होता. मेरे लिए भी रोज possible नहीं होता. But what you can do is you can at least try to do it, once a month या ट्वाइस अ मंथ. सो दैट इज लाइक एक या 2 बार महीने में आप मंथ में आप लाइव आके इंटरेक्ट कर सकते हो ऑडियंस से, या आप स्टफ एटलीस्ट शो कर सकते हो. सो ट्राई टू डू दैट.
rose every day, I know it's not feasible for anybody, unless you have a lot of help at home. So अगर आपके पास बहुत सारी help है तब आप कर सकते हो, but if you do not have that, then at least once or twice a month is something that you can target, and at least start doing that. So once a month से start करोगे, you will grow to twice a month, and then you will go on to thrice a month, then maybe once a week you can do it, once a week, right? Okay. So now, one of the major points that everybody struggles with is that how do we set our targets हम कैसे set करें, right? कि अपनी projections हम कैसे निकालें, प्लान कैसे बनाए, प्लान कैसे बनाते हैं. सो दिस इज हाउ यू डू इट. सबसे पहले तो जस्ट सी दैट आर यू generating a steady revenue for at least 6 to 8 months. So this is something where people lack. बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारा 6 to 8 months का steady हम इनकम लेके भी आ रहे हैं घर में या नहीं लेके आ रहे. सो वी थिंक, हम क्या करते हैं, हम 1 महीने 2 महीने अच्छा सा बड़ा मोटा वाला अमाउंट आ जाता है, वी गेट वेरी हैप्पी, अरे वाह इस बार तो बहुत अच्छा सा अमाउंट आ गया, एंड शॉपिंग करने चलते हैं. नो गाइस, व्हेन वी आर इन द एक्सपेंशन मोड, व्हेन वी आर इन दैट मोड ऑफ प्लानिंग आवर बिजनेस, growing our business, we have to stay very very careful. We have to understand that projections ऐसे नहीं होते हैं. projections के लिए हमें डेटा चाहिए होता है, हमें डेटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एंड वी हैव टू बी श्योर दैट हम एक सर्टेन अमाउंट मेंटेन कर रहे हो फॉर फ्यू मंथ्स. सो if we are able to maintain something for, hi Shilpa, if you are able to maintain something for around 8 months, it is usually said that we can maintain it for a longer duration of time. 6 से 8 महीने अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, so कुछ बिगड़ना होता है तो वो 6 से 8 महीने में बिगड़ जाता है. whatever situation, bad situation we have to see, वो usually we face it in 6 to 8 months. So my usual suggestion to people is that try to see if you're generating a steady income for at least 6 to 8 months, and आपको वो data points अपने साथ रखने चाहिए. maintain as an excel sheet अपनी maintain करके रखो. Then what profitability are you recording in these 8 months? इनकम तो ठीक है, बट इनकम में से अब खर्चे भी तो माइनस करने हैं ना. लॉट ऑफ पीपल डू नॉट सब्ट्रैक्ट देयर एक्सपेंसेस भी तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना, एक्सपेंसेस भी तो हमारे हैं, वो घर से थोड़ी ना लेने हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू नोट योर प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज जब आप अपने मंथली एक्सपेंसेस बांध लोगे, फॉर एग्जाम्पल मे बी आई वॉन्ट टू एम्प्लॉय समवन, मे बी आई वॉन्ट टू बाय सम थर्ड पार्टी को मैं हायर करना चाह रही हूँ, या मैं कुछ ऐसा एक्सपेंस करना चाह रही हूँ, स्पेस रेंट करना चाह रही हूँ, सो दैट मीन्स वो एक मेरा एक्सपेंस है जो कि रेकरिंग एक्सपेंस हो गया, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हो तो आप तीसरे मंथ उसको ये तो नहीं कह दोगे ना, भाई मैं आपको अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, टाटा बाय बाय. यू कैन नॉट डू दैट टू अ पर्सन. यू हैव टू स्टे रेडी. आपको उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा. So please understand that you have to note your profitability. Profitability को अपनी note करके रखो कि या these 8 months I was able to maintain my profitability. So वो noted होनी चाहिए आपके पास. Now also note that do you have a steady customer POC? POC एज एन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. हम कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं स्टेडीली या नहीं? आर यू एबल टू रीच योर क्लाइंट्स इजिली और नॉट? आर यू जनरेटिंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लीड्स पर मंथ? व्हाट इज दैट नंबर, राइट? क्या हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लीड्स जनरेट कर पा रहे हैं एवरी मंथ और नॉट? व्हाट इज माय अप्रोक्सीमेट कन्वर्जन रेट? सो आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना बिजनेस जो है वो इन नंबर्स पे बेस कर दो. आई एम सेइंग दैट दीज आर द डेटा पॉइंट्स. इन डेटा पॉइंट्स पे हम अपने प्रोजेक्शंस बनाने वाले हैं आगे के. सो दिस इज हाउ ऑल द बिगर कंपनीज डू. हम आगे के जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो पीछे के नंबर्स पे ही बेस करते हैं. आउट ऑफ द ब्लू हम कुछ नहीं करते कि मैं ये सोचूं आज मैं उठी हूं और मैं ये सोचूं कि मेरा नेक्स्ट मंथ का टारगेट है दैट आई एम गोइंग टू अर्न 5 lakhs और 10 lakhs. किस बेसिस पे मैं ये अर्न करूंगी ये मुझे पता होना चाहिए. सो दिस इज हाउ वी डू द प्रोजेक्शंस.
व्हाट इज योर अप्रोक्सीमेट कन्वर्जन रेट, ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट एक्सपेंसेस आर यू एक्सपेक्टिंग व्हेन यू एक्सपैंड, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर एक्सपेंशन सोच रही हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ. क्या ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि मेरे होने वाले हैं. मैं स्टूडियो रेंट करूंगी, मैं किसी को हायर करूंगी, मैं किसी थर्ड पार्टी को लेके आने वाली हूँ. वेदर आई कैन सस्टेन देम इन करंट प्रॉफिटेबिलिटी रेट और नॉट. ऐसा तो नहीं कि आज से 3 महीने बाद मैं मेरे को लगे कि यार ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है. सो इट मीन्स कि आपके कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं तो दिक्कत आ रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको थर्ड मंथ में जाके घर वालों से बोलना पड़े कि भाई मेरे बिजनेस को सस्टेन करने के लिए मुझे पैसा दे दो. आई रियली डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू फेस दैट सिचुएशन. हाँ, कभी हो सकता है ये कि वन ऑफ केसेस में हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं दैट वी माइट नीड समबडी टू बेल अस आउट. दैट इज परफेक्टली फाइन, बट वी शुड ट्राई टू स्टे रेडी. देखो, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है अपने बूते पे, एंड वी शुड, आई feel that we should be, we are capable of handling our selves in the bad situations. So we should try to project it. हमें ये पता होना चाहिए कि ठीक है, अगर मेरे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, अनलेस वो मैं हैंडल नहीं कर सकती, तब की बात अलग है. बट ट्राई टू प्रोजेक्ट कि अगर ये ऐसी सिचुएशन हुई तो मैं उस सिचुएशन में क्या करूंगी. So before you take any further decisions, you must have these data points ready with you. Now, अब ये तो हुआ कि आप ये करोगे, but in case आपके पास ये डेटा, a lot of us have been tracking this. So women are, वो कहते हैं ना, हम नेचुरली बहुत विजिलेंट होती हैं. तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास ये डेटा पहले से होता है. तो आपके पास अगर ये पहले का डेटा है तो उसको सिर्फ यू जस्ट हैव टू पुट इट इन एन एक्सेल शीट, और आपके पास ये डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी होंगे. So what you need to do is open up your diaries, registers. If you're doing it on laptop, then तब तो कोई problem ही नहीं है. Open up that Excel sheet and just see the data. If you think that you are ready for the expansion, अपने प्रोजेक्शंस के नंबर्स निकालो, अपने आगे के टारगेट सेट करो कि मैं अभी तक ये कर रही हूँ, नाउ आई माई गोल इज दिस, एंड voila, right? So you'll be confident in yourself. You will feel that confidence, वो एक कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा अपने अंदर कि हाँ ठीक है, मुझे पता है कि मैंने ये 8 महीने का, जब एक डेटा देखोगे ना, अपने आप को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार 8 महीने कर लिया तो आगे के 8 महीने क्यों नहीं कर सकती, थोड़ा सा ही तो और पुश देना है. सो 8 महीने अगर आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो, या 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, या 50,000 रुपए कमा रहे हो, तो अगले 3 महीने का या अगले 5 महीने का टारगेट जो है उसमें आप 25% ऐड कर लो या 30% ऐड कर लो. Right? So just try to do this. Just try to do this and you will yourself feel the difference. Okay. Why the question is, क्यों मैं इतना होमवर्क आप लोगों को कह रही हूँ. You can ask this question from me कि why do you want us to do so much extra work. हम बहुत अच्छा सा हम अपना खुशी से काम कर रहे हैं, and Astha is giving us so much homework. Yeah, what is wrong with you? School थोड़ी है. So the simple answer is, expansion is not difficult, guys. Expand karna, growth is never difficult. Sustaining it is the tricky part. Sustenance tricky होता है. 1 महीने कर लोगे, दूसरे महीने कर लोगे, तीसरे महीने उसको ना सस्टेन करने की जब बारी आती है ना, वी हैव टू रन टू समवन एंड आस्क देम टू बेल अस आउट. चौथे महीने जब वो बिल हाथ में आता है ना, रेंट का बिल हाथ में आता है, या किसी की सैलरी जब देनी होती है तो उसका बिल जब हैंड में आता है, देन वी हैव टू आस्क फॉर मनी. एंड वो, आई पर्सनली फील दैट दैट इज नॉट राइट. जब हम अपने आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें अपने आप चीजें संभालनी भी चाहिए. सो दिस इज वेरी इजी. ट्रैक योर डेटा पॉइंट्स एंड देन यू मेक योर प्रोजेक्शंस. ओके, नाउ सी, अब let me know if things are clear until here. यहाँ तक let me know if you guys, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, this is very very बहुत ही bizarre बात है, ये weird सा लग रहा है, ये concept ही बहुत अलग है, मुझे तो I don't agree with this, किसी को ऐसा लग रहा है, so you can write it to me in the comments, and otherwise नहीं तो हम आगे चलते हैं.
ओके। ओह! ओके, सो वी हैव अभी तक मुझे थम्स अप ही नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट। सो सी द पॉइंट इज़ दैट फोकस इज़ एवरीथिंग। जब आप ये चीज़ करना स्टार्ट करोगे, योर माइंड विल बी फोकस्ड ऑन बिज़नेस एंड फोकस्ड on your work, which is everything. So it is always a game of how your mind works. So हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, इट इज़ अ वेरी वेरी, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। हम एक बार जो चीज़ सोच लेते हैं, हम वो ठान लेते हैं, हम वो करके रहते हैं। एंड यू नो, यू इफ यू आर योरसेल्फ नॉट सॉर्टेड, अगर हम कंफ्यूज्ड रहते हैं या हम अपने काम से स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट क्लियर एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इन आवरसेल्व्स एंड वी कीप taking additional stuff on our head, we are bound to lose our focus, and that is something that I do not want any of my mentees to face. मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी वो सिचुएशन में आए कि जब ये लगने लगे कि हम things are getting haywire और हमारे हाथ से निकल रही हैं. So all these exercise will help you get your focus back. So this is something which is very very important. So once you feel sorted, ऐसा लगे कि हाँ, थिंग्स आर सॉर्टेड एंड आई कैन नाउ टेक द लीप एंड आई कैन गो हेड, डेफिनेटली डू इट. सो लॉट ऑफ पीपल माइट बी थिंकिंग कि डरना मत, ये नहीं सोचना कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं. सो टेक दैट लीप ऑफ फेथ. वो लीप ऑफ फेथ लेना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, रिस्क लेना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है. मैंने सिर्फ आपको कुछ चेक पॉइंट्स बताए हैं दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. सो ये मत सोचना कि क्या हम कभी आगे नहीं बढ़े, क्या हम कभी एक्सपेंशन ना करें. ये तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट you should be self confident, you should be aware where you are, where you stand. अपना जो एक रिस्क जो लेने वाला जो एक अंदर एक फैक्टर होता है ना, उसको कभी मरने नहीं देना है. सो कैलकुलेटेड रिस्क डेफिनेटली लो, आगे बढ़ो. इफ यू थिंक यू आर रेडी, डू नॉट स्टेप बैक, डू नॉट स्टेप बैक गाइस, बिकॉज बहुत बारी हम लोग रह जाते हैं पीछे, सोच लेते हैं कि नहीं पता नहीं क्या होगा. वो नहीं करना, वो नहीं करना. इफ यू थिंक दैट numbers are favoring you, if you think that you are ready, then just go for it. उससे भी पीछे नहीं हटना. So I do not want to, please don't think that I'm trying to scare you. I'm not trying to scare anybody. I want to encourage each one of you to go ahead and take that leap of faith, because आगे बढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. जब तक आगे बढ़ोगे नहीं, तब तक पता भी नहीं चलेगा. राइट. ओके. अच्छा, अब थोड़ी सी बात लीड जनरेशन की करते हैं. सो वंस यू फील दैट यू आर जनरेटिंग इनफ लीड्स फ्रॉम वन चैनल, यू शुड ट्राई एंड गो हेड एंड लुक फॉर मोर चैनल्स, कि हम एक चैनल से हम इनफ लीड्स जनरेट कर रहे हैं. नाउ आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैनल. सो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. फेसबुक पे आप अच्छी से लीड्स जनरेट कर रहे हो, यू थिंक कि हाँ, फेसबुक पे मेरा ऑटोमेट हो गया है और मैं बहुत अच्छे से लीड्स मेरी आ रही हैं. यू कैन थिंक ऑफ मूविंग ऑन टू न्यू चैनल्स, लाइक इंस्टाग्राम पे आप स्टार्ट कर सकते हो. एनी अदर चैनल यू वांट, you can do that. But there is one mistake that a lot of people do, which is that once they start working on the new channel, they forget completely about the last channel that they were working on. उससे प्रॉब्लम ये होती है that नया चैनल टाइम लेगा यील्ड करने के लिए, पुराने चैनल पे आपने काम करना बंद कर दिया. सो दैट साइकिल ब्रेक्स ऑफ completely and they end up losing getting leads. तो वो नया चैनल से लीड्स आनी शुरू हुई नहीं, पीछे वाले चैनल से लीड्स आनी बिल्कुल बंद हो गई. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट whenever you start working on something new, that does not mean that you forget about the last thing. So नए चैनल पे काम करना स्टार्ट करो, बट पीछे वाले चैनल को बिल्कुल भूलो मत. हाय मुनास. Right? So please understand this thing very very carefully, that whenever you work on any new channel, try to work on both the things simultaneously. So this is one very important point that I wanted you guys to understand, कि एक चैनल पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम पिछले वाले को भूलते नहीं है, साइमल्टेनियसली काम करने की कोशिश करते हैं. 100% टाइम मत दो, बट 50% उस पर जरूर दो, सो दैट आपको वो बिल्कुल भी जीरो ना कर दे लीड्स देना. ओके.
Another very important point that, hi Supriya, that I want all of you to understand is that in this year, try to think a little bit about generating alternate income. So alternate income से मेरा मतलब है, you can think of something like how to start an alternate income channel either from your current business. इस वाले बिजनेस से देख लो कि कैसे आप you can generate some छोटा सा amount of alternate business. You can like conduct a workshop, आप कुछ करते हो, आप उसकी workshop start कर सकते हो. Even a small amount of income would help. Or think of some other passion that can help you start earning. ऐसा नहीं है कि आपको immediately you have to start earning, but at least start, think of something that can help you in generate income in long run. So most people forget about this part, but if possible I want all of you to think about it in this year 2022 में एक गोल रख लो कि कुछ हमको सोचना है कि I am earning, but I want to start off something, set up something that can yield me a small amount of income separately, and an alternate source of income. कुछ छोटा 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 सा आता रहे मुझे, बड़ा नहीं चाहिए मुझे, उससे कोई बहुत बड़ा शॉपिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बट एक छोटा सा इनकम मेरे को आता रहे. Just think about it. Okay, now very important thing that I want to talk to you about is maintaining the growth part. Okay, so growth हम maintain कैसे करते हैं? So this is a lot of people wonder that how do I maintain the growth streak? Growth होना तो start हो गया, but उसको grow जो streak है उसको maintain कैसे किया जाए? So simple answer: never forget and stop doing where you started from, right? कहाँ जहां से आपने स्टार्ट किया उसको कभी मत भूलो, अपने रूट्स को कभी मत भूलो. Whatever helped you in the first go is going to help you always. Stay humble and always add on things. तो जो आपने शुरू में किया है उसको कभी भूलो मत, उसमें हमेशा add on करते रहो. I see a lot of people, they talk, once they are successful they get so arrogant, they get rude, and they'll think that आप तो हम मास्टर्स हो गए हैं अपने लाइन के, हम बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, हम किसी की नहीं सुनते. I see a lot of people doing that, but that is where the downfall begins. वो मत करो. That is, I don't think that is right. जहां से आपको सक्सेस मिली है वहीं से आप अपनी ग्रोथ स्ट्रीक को मेंटेन कर सकते हो. स्टे हम्बल, स्टे काइंड, स्टे कंपैशनेट, स्टे एम्पथी जो है उसको मत जाने दो. अपनी एम्पथी की एक जो हमारे अंदर फीलिंग होती है उसको कभी मत जाने दो, उसको कभी मत खोने दो. एंड यू विल सी योर सेल्फ दैट जो आपकी ग्रोथ की स्ट्रीक है वो नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी. ये इसका सिर्फ एक ही सीक्रेट होता है, दैट जहां से शुरुआत करिए ना हम लोग वही भूल जाते हैं. अगर उसको नहीं भूलोगे तो वो ग्रोथ की स्ट्रीक भी नहीं जाती है. ओके, नाउ प्लानिंग पे आते हैं. थैंक यू पूजा. प्लानिंग पे आते हैं. दैट इफेक्टिव प्लानिंग प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल गाइस. हमेशा प्लानिंग जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू शुड नो व्हाट यू वांट टू डू एंड ओनली देन यू कैन अचीव इट. मतलब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है तो मैं उसको अचीव कैसे करूंगी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेट एक्सपर्ट हेल्प फ्रॉम योर कोच. अगर कोई और भी आपका बिजनेस कोच है तो उनके साथ सेशन करके अपने गोल्स सेटअप कीजिए, सो दैट यू कैन एटलीस्ट अचीव इट. मतलब क्या अचीव करोगे जब पता ही नहीं है कि क्या अचीव करना है? यू शुड नो, मालूम तो होना चाहिए ना कि हमें क्या करना है. सो ट्राई टू डू दैट. Set annual, half yearly, quarterly, monthly, whatever goals you want to set. Hi Priyanka, how are you? You want to achieve, right? So आप उसको break down करते रहो. Okay, so last point that I want to sure Kiran, last point that I want to discuss with all of you is branding. So those who feel they have sorted all the above things, जिनको लगता है कि हमने आगे का पीछे का सारा ये जो अभी हमने डिस्कस किया हमने सारा कुछ सॉर्ट कर लिया है,
उसको उनको सबको अपने ब्रांडिंग पे काम करना स्टार्ट करना चाहिए. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ब्रांडिंग, एंड ब्रांडिंग इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स गाइस. ब्रांडिंग सुनने में बहुत छोटा सा वर्ड लगता है, बट ब्रांडिंग हमारा जो एक्चुअली ब्रांडिंग एक्चुअल हमारा डोमेन है वो बहुत बड़ा होता है. So I will not be able to cover branding in this session because it is already 5:15 and Dr. Mitali ka session is starting at 6 o'clock. सो ब्रांडिंग का जो सेशन है वो हम सेपरेट करेंगे. इसके बाद व्हाट्स द डे टुडे, आज क्या डे है गाइस, आज फ्राइडे है. नेक्स्ट वीक हम ब्रांडिंग का सेशन एक ले लेंगे. यू गाइस कैन लाइक साइमल्टेनियसली भी आप स्टार्ट कर सकते हो. थोड़ा थोड़ा हम ब्रांडिंग पे काम करते रहते हैं, बट ब्रांडिंग इज समथिंग दैट ऑल ऑफ यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन साइमल्टेनियसली ऑल्सो. नहीं तो जिनको लगता है कि हमने सारे पॉइंट्स पे काम कर लिया है, वो एक्टिवली ब्रांडिंग पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. Hi, Ankita. I'm very glad that this live has helped you a lot. That's wonderful. Thank you so much. Okay. So guys, if you do not have any questions, I can probably or if you guys have any questions, किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो. uh, no worries, Garima. I'm pretty sure you have your reasons. If you guys have any questions, you can let me know. कुछ है questions आप पूछ सकते हो. I am here for next 1 minute or so. And let me just remind you that we have Dr. Mitali's session at 6 o'clock in the group. Mrs. Diva Facebook group में हमारा उनके साथ session है. She is going to talk about a very important topic. Most welcome, Dr. Rashmi. I'm trying to read questions कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो. Most welcome. Most welcome, Bijal. Most welcome, Pooja. Thank you, Banani. Most welcome, Surbhi. Okay, so Megha is asking, do we have to advertise every day in our page for our growth of our products? Megha, so this is, this is a part of the social media thing. And if you are aiming for organic growth, then definitely yes. So organic growth चाहिए तो रोज definitely करना चाहिए. Okay. Mubina is asking how to make a catalog of articles. Like, should we get it designed from expert, both physical and virtual? Catalog of articles. Where do you want to post it? Like, you want to get it done for a website or something? So see, Mubina, see, my suggestion is initially, if you feel that you have budget, get it done from an expert. अगर लगता है कि अभी बजट नहीं स्पेयर कर सकते हो, then don't fret about it. Do it yourself. So see, that goes for everything. So I usually टेल दिस टू एवरीबडी. बहुत बार हम ना क्या करते हैं, हम चीज़ों को बहुत ओवर थिंक करने लगते हैं कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये मुझे एक्सपर्ट से कराना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट का फोटोशूट अच्छा, मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, फेसबुक पेज सेटअप कराना है, किसी एक्सपर्ट से ही कराऊं, फेसबुक मार्केटिंग करानी है, किसी एक्सपर्ट से ही कराऊं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनवानी है, एक्सपर्ट से ही करवाऊं या नहीं करवाऊं. गाइज प्लीज अंडरस्टैंड कि if you do not have the budget, then don't overthink things. जो कर सकते हो अपने आप वो कर लो. बजट अगर है, ब्रिंग एन एक्सपर्ट. बजट नहीं भी है, बजट नहीं है आपके पास, तो खुद करना स्टार्ट कर दो. डोंट ओवरथिंक थिंग्स. लाइक परफेक्शन के पीछे ना हम हमेशा ना आमिर खान बनने की कोशिश करते हैं. आमिर खान, प्लीज अंडरस्टैंड, हैज अ ह्यूज सपोर्ट. आमिर खान के पास ना बहुत बड़ी टीम है, वो तभी परफेक्शनिस्ट बन पाए हैं. हमारे पास इतना सपोर्ट नहीं है, ना हमारे पास इतने सोर्सेज, रिसोर्सेज और मीन्स होते हैं. सो हम ओवरथिंक करने की पोजीशन में नहीं है. जो कर सकते हो, अपने हाथ में जो होता है उसको बस करते जाया करो. टिक 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 करके जो हमारे टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करते जाया करो, इंस्टेड ऑफ ओवरथिंकिंग स्टफ. ओके, सो ये मत सोचो कि मेरे को एक्सपर्ट ही लेके आना है, एंड यू एंड अप प्रोबेबली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन इट. Just
थिंक अबाउट इट, सोच लो, अगर लगता है कि स्पेयर आउट कर सकते हो मनी, कर लो, नहीं कर सकते हो तो अभी रुक जाओ, उसको 6 महीने डिले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप से करके डाल लो। ओके, सो मैं अब दिस वुड बी मी टू। ऑलराइट, Mubina is saying, do we need a catalog for more client reach? So, Mubina, I think this would depend more on the business plan that you are following. So, we will need to discuss a bit more. तभी मैं कह सकती हूँ कि हम कैटलॉग पे कहाँ से पहुंचे हैं, तो थोड़ा डिस्कशन ज्यादा करना पड़ेगा, ऑफ हैंड मैं नहीं इसका रिप्लाई कर पाऊंगी। किरण इज आस्किंग, 1 post per day will be fine. In most cases, yes, Kiran, 1 post per day is usually fine, but depending on the products, क्या products हम deal कर रहे हैं, क्या हम pitch करना चाहते हैं clients को, audience को, members को, 1 post per day is usually fine. एंड व्हाट आई वाज सेइंग, जो हम नया अपना सोशल मीडिया थिंगी लेके आ रहे हैं, कोर्स लेके आ रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सुनीता जी का क्वेश्चन है, इज मेकिंग योर ओन वेबसाइट यूजफुल? सो सुनीता जी, दिस इज समथिंग दैट आई हैव आंसर्ड वेरी लॉन्ग टाइम अगो, मैं दोबारा आपके लिए आंसर करती हूँ। सो वेबसाइट बनाना इज वेरी वेरी हेल्पफुल, नो डाउट अबाउट दैट, बट डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर एट इन योर business currently is something that you need to consider. So आपको ये देखना होगा कि अभी आप अपने बिजनेस में करंटली कहाँ हो। वेबसाइट बनवाना मुश्किल नहीं होता, बट वेबसाइट पे लोग लेके आना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। सो लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनवा लेते हैं एंड देन दे थिंक कि शायद लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑर्डर्स आना वेबसाइट के थ्रू स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है। वेबसाइट तो बन गई, लेकिन अब हम लोग कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमें वेबसाइट मार्केटिंग करवानी पड़ती है, विच इज इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी टीडियस टास्क, बड़ा टीडियस टास्क होता है, एक्सपेंसिव टास्क होता है। एसईओ करवाना पड़ता है वेबसाइट का, गूगल मार्केटिंग करवानी पड़ती है, एडवर्ड्स दिलवाने पड़ते हैं हमको, एंड वी हैव टू लाइक वेबसाइट मार्केटिंग इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज टॉपिक एंड बहुत वो एक्सपेंस, एक सेपरेट एक्सपेंस हो जाता है वो। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि वेबसाइट आप तभी बनवाएं जब आप उसके लिए 100% रेडी हो, नहीं तो वो वेबसाइट बनी रहेगी और रखी रहेगी और उसका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग तो आ नहीं पाएंगे उस पे। तो वेबसाइट मार्केटिंग, आपको वेबसाइट बनवा लोगे, फिर वेबसाइट मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू राखी, मोस्ट वेलकम सुरभि। Ankita is asking, are hashtags useful for maximum reach? Ankita, if you're asking for Instagram, then definitely yes. But hashtags again have their own strategy. So hashtags की Instagram पे अपनी strategy है. Facebook पे gradually they are trying to build up the hashtag thingy on Facebook. As of now, I have not seen a huge amount of use of hashtags on Facebook. धीरे धीरे start हुआ था, बहुत ज्यादा यूज अभी नहीं हो रहा है, बट इंस्टाग्राम तो डेफिनेटली डिपेंड ही हैशटैग्स पे करता है, बट स्ट्रैटेजी फिर भी चाहिए हैशटैग्स पे से लोग लेके आने के लिए। सो डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे आप यूज करना चाहते हो, कौन से चैनल पे आप यूज करना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है। ओके, ओ राखी, ओ okay, it looks like I'm missing a few comments. Supriya is asking on Facebook, what are the key pointers to reach maximum clients? You're asking a very broad question, Supriya. This is Facebook marketing. How to do Facebook marketing? That is what you are asking. We have done a lot of sessions on that. आप पहले के lives देखोगे, you will get your answer. Sunita ji, marketing is your weak point. Not just your weak point. हम women entrepreneurs का weak point होता है, बहुत सारे women entrepreneurs का weak point होता है, which is why I am here to help you all. Incidentally, marketing is my forte. So मैं शुरू से ही marketing में, advertising में strong रही हूँ, इसीलिए I thought that I should become a business coach and help my
fellow women entrepreneurs. Okay, so Somita is asking, when expanding to new markets, should we think about marketing our name first or first get good sale? When expanding to new markets, should we think about marketing our name first or get good sale? So this depends, Somita. ये आप इसको इस तरह से सोचो कि जब आप एक मार्केट चेंज कर रहे हो, आप एक नए डोमेन में जा रहे हो, न्यू मार्केट में जा रहे हो, तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स आएंगे. ऑफ कोर्स इट वुड रियली हेल्प इफ यू हैव एन एस्टैब्लिश्ड नेम फर्स्ट. सो फॉर एग्जांपल, व्हेन उबर was expanding, छोटा सा example दे रही हूँ, Uber was expanding its market, तो because it had a very good name in US and वहाँ से वो बाकी जगह पे गया, तो it really helped the brand. So similarly, if the brand has a good name and reputation in its existing market, it definitely helps. रेवेन्यू आपके पास होगा अच्छा, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज यू विल हैव मोर फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ वेयर यू कैन स्पेंड मनी. तो दोनों ही चीजें जरूरी है. रेवेन्यू आपके लिए जरूरी है, नाम मार्केट कैप्चर करने के लिए जरूरी है. आई होप यू गेट माई पॉइंट. ओके, थैंक यू पूजा. ऑल राइट. Yes, domains. Someone wrote about domains. Yes, Sonia. Some domains are pricey. They are not as pricey. Also depends हमने कहाँ से लिया है. So for example, ours is हाँ कभी कभी हाँ हो जाता है. You're right. Okay. So I hope Somita, you have got the answer to your question. So I think we will end the session here now. Thank you so much for joining us today and attending this session. And I hope you liked it. Please send me a feedback if you like this session. I really love reading all your feedbacks and it really helps me also in improving myself, because मेरे लिए बहुत important होता है जब आप मेरे साथ अपना feedback share करते हो, because that is how I improve myself. And thank you, Kiran. Most welcome, Sunita ji. Most welcome. कभी भी आप जब चाहे connect कर सकते हैं. Thank you, Neha. And bye bye everyone. See you. And if you like the session, please drop in a message. आप मुझे WhatsApp कर सकते हो, ग्रुप में डाल सकते हो feedback. I really love reading all your feedbacks. Thank you. Bye bye. Thank you, Shiki.